of induction. If you want to call it magic or the axiom, that's your choice. Magic of induction. It's a spell that induction जो है, right? That's what we had. अब बताएं मेरा झूठ कहाँ पर है? वो ये था कि फर्स्ट टाइल गिरेगी, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, अगर फर्स्ट टाइल गिर रही है, अगर वो इवन है तो वो इवन पे n+2 पे जाके अगली टाइल है। तो हम ये सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्या हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते? ये नहीं प्रूव होते। हम क्या प्रूव करने में कामयाब होते हैं? हम क्या प्रूव करने में कामयाब होते हैं? अगर ये नहीं प्रूव कर पाते तो क्या प्रूव कर सकते हैं? ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर nth टाइल गिर रही है तो n+2 गिरेगी। अगर nth गिर रही है तो n+2 गिरेगी। इज दैट द कंसेंसस एवरीबडी हैज़? बैठे सही तरह बैठे जी। इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम ऑफ इंडक्शन गलत है। नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम ये पूरा हम प्रूव क्या कर पाते हैं? हम ये प्रूव करें कि अगर हम n को प्रूव करें, n को यूज करके हम n+1 ही प्रूव कर सकते हैं कि वो गिरे, हम n+2 प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं एक सेकंड सो जी आप भी बता दें। सर हमने जब से x⁻7 तक एक दफ़ा सारों को दोबारा कंप्लीट किया था x+1 और x⁻7 तक, तो हमने पहले भी एक चीज़ नोटिस की थी जिसे हमने जनरलाइज फार्मूला बताया था, 2 के डिफरेंस से इवन और ऑड का पैटर्न बता रहा है। सब कुछ सही है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रूव हम क्या कर पाते हैं? हम आप जो कर रहे हैं, जो आपने एक्सियम यूज़ किया, सो आपने कहा है यू हैव चेक्ड वेदर द फर्स्ट टाइल फॉल्स, आपने ये किया चेक फर्स्ट टाइल फॉल्स, ये वही आपने भी यही किया है, मैंने भी यही कहा था। अब आप क्या प्रूव कर पाते हैं? व्हाट कैन यू एक्चुअली प्रूव? जी सर मुझे बता दें बैठ के सुकून से। स्टार्ट होगी a की पावर n से, फिर a की पावर 1 कम होगी और b की पावर 1 इंक्रीज होगी। अच्छा, इस तरह अगर हम x+1 और x की पावर होल पावर n पे देखें तो पहले उसकी पावर x पावर n और दूसरी मरतबा कोई कांस्टेंट k के साथ x की पावर n-1 और 1 ओवर x की पावर 1। अब जो 1 ओवर x की पावर 1 है तो वह 9-2 हो जाएगी। और तो फिर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन के अभी तक बिल्कुल आपने सही बात की है, परफेक्टली एग्रीड। लेकिन मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल था, वो ये था कि हम यहाँ पे आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं, what have you actually managed to prove कि if the nth tile falls then the n+2 tile falls या something else? अगर n x की पावर n+1 और x की पावर n, अगर हम उसको प्रूव करते हैं इंटीजर, उसके ज़रिए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि x की पावर n+1 और x की पावर n ये भी इंटीजर है। मसलन हम x+1 और x³ + 1 ओवर x³ हम लोग इस तरह। एक सेकेंड सॉरी, मैं आपको करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक योर एग्जांपल x+1 ओवर x रेज़ टू द पावर लेट्स से 7 या 8 या 9 या 10, what do you want? Pick any number that you like. 5 बहुत छोटा है, it's too small. 7, okay, let's do 7. So as you suggested, exactly, and that's very nice. आपने बड़ा अच्छा है. There's a, so this is what your argument is saying. Oh sorry, not I should यहाँ पे एक ही रखते हैं. So what I'll try to do is, so this will be so हमें ये पता है कि this is true. So now हमने ये prove करना है. So what you do is, so this will turn out to be x to the so actually आपका जो argument है, this will be x to the 7 plus 1 over x to the 7, and by the symmetry of Pascal's triangle, exactly as you suggested, this will look like this. Are we recording? Saddam, record कर रहे हैं हम या नहीं? Great. Okay. So इस तरह कोई चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, right? Mr. Abdullah Shah, is that what you were suggesting? Yes. Okay, good. So we agree. Plus
Yeah, plus k to the 1 x plus 1 over x. That's it. Right? इस तरह कोई चीज़ या कोई और चीज़ यही था. ओके. सो नाउ कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट. सो अब हमने प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना है कि ये इंटीजर है. राइट? दैट्स व्हाट आवर गेम वाज. सो व्हाट डू वी नीड टू, क्या ये इंटीजर है? ये हमें पता है ये इंटीजर, बिकॉज x plus 1 over x is an integer. So what do we need to prove that this is an integer? उससे पहले x की पावर 5 plus 1 over x की पावर 5 को इंटीजर प्रूव करना पड़ेगा. अगर उसको हमने प्रूव करना है, उसके लिए हमें x क्यूब plus 1 over x क्यूब को प्रूव करना पड़ेगा. उसको करने से पहले हम लोग x plus 1 over x करेंगे. उससे अगर हमने x plus 1 over x को प्रूव कर दिया, हम Yeah. x cube plus 1 over x को Okay. प्रूव करेंगे. इस तरह के तीन चीजें या तमाम Okay. जी. सर अगर हमें x to the 7 plus 1 और x to the 7 को इंटीजर प्रूव करना है, तो हमें x to the 5 plus 1 और x to the 5 x cube plus 1 और x plus 1 और x को इंटीजर प्रूव करना पड़ेगा. Yeah. लेकिन एक्सियम ऑफ इंडक्शन के लिए हमें x to the 7 plus 1 और Yeah. x to the 7. So that is exactly, आप दोनों जो बात कर रहे हैं is roughly right. So what it should, हमें जो चेंज करना पड़ेगा, हमारा एक्सियम चेंज हो रहा है. Prove if all n tiles fall, that's what we need, not the nth tile. If all previous n tiles fall, if all previous n tiles fall, then n plus first tile falls, then n plus first tile falls. Slightly different. हमें प्रूव करने के लिए जब हम इसको we know as an integer, we want to prove this is an integer. So we need to know this is an integer, this is an integer and this is an integer. All three are integers. और आपका पॉइंट सही है कि हमें प्रिसाइसली इवन और ऑड के अंदर हमें ऑड और इवन में सेपरेट आउट कर सकते हैं. दैट इज सर्टनली ट्रू. लेकिन नाउ नोट, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बात की, एंड सो व्हाट विल हैपन इज कि दिस इज कॉल्ड, दिस इज अदर, दिस इज नॉट द, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एन अदर एक्सियम. तो यहाँ पे, and now we are going to conclude by invoking some other magic. Conclude all tiles. We are still going to conclude all tiles fall. But now this is going to be the magic of strong induction. Yeah, not weak induction. Jo strong induction. Actually, strong induction is weaker than induction, but that's fine. Okay. Anyway, so that's called the magic of strong. So slightly different axiom है. It's still an axiom. Okay. हमने now note कि ये भी axiom बड़ा natural है. देखें, वही प्लेसमेंट है. रिमेंबर, हमने यहाँ पे टाइल्स खड़े किए हुए हैं, ये जो यहाँ पे पूरे टाइल्स और चलते जा रहे हैं फॉरएवर. हम चेक कर रहे हैं कि पहला टाइल गिरती है कि नहीं गिरती. राइट, दैट्स व्हाट वी चेक. यहाँ पे भी मैंने, वहाँ पे मैंने वही चेक किया. राइट, पहली टाइल गिरती है. ओके. दोनों केसेस देखें कितने सिमिलर हैं. पहली टाइल गिरती है. लेट से हम ये प्रूव कर पाएँ और आप वो प्रूव कर पाएँ. ठीक है, मैं ये प्रूव कर पाया हूँ, आप वो प्रूव कर पाएँ. हम दो मुख्तलिफ लोग हैं. राइट. सो मैंने ये प्रूव किया, आपने ये प्रूव किया, लेकिन देखें तकरीबन एक ही, इनफैक्ट एग्जैक्टली एक ही चीज़ है. मैंने ये प्रूव किया है कि जब फर्स्ट टाइल गिरती है तो व्हाट डू आई नो, नहीं, सेकंड टाइल गिरेगी. n+1 नहीं, सेकंड टाइल गिरेगी. राइट. सो अब मेरे केस में आई नो सेकंड टाइल गिर गई है. आप अपने केस में गौर करें, आपने क्या प्रूव किया? आपने क्या है कि अगर तमाम टाइल्स जो 1 या 1 से पहले गिर जाएँ तो फिर क्या होगा? सेकंड टाइल, n नहीं, सेकंड टाइल गिरेगी. राइट. आपकी भी सेकंड टाइल गिर गई, मेरी भी सेकंड टाइल गिर गई. दोनों हम कन्विंस्ड हैं. क्या आप कन्विंस्ड हैं आपकी 2 टाइल्स गिर गई हैं? मैं भी कन्विंस्ड हूँ, मेरी भी 2 टाइल्स गिर गई हैं. एग्रीड और नॉट एग्रीड? यहाँ पे किसी को कोई शक हो? या एवरीबडी एग्रीज कि इन्होंने प्रूफ मुख्तलिफ किया है. इन्होंने ऑलमोस्ट आसान प्रूफ किया है. इन्होंने कहा है कि अगर तमाम पिछली टाइल्स गिरी हों तो अगली टाइल गिरती है. इन्होंने ये प्रूफ किया. राइट. अगर तमाम पिछली टाइल्स गिरी हों, ऑल प्रीवियस n टाइल्स हैव फॉलन, देन द n प्लस फर्स्ट टाइल फॉल्स. राइट. मैंने ये, आई हैव डन समथिंग हार्डर. मैंने कहा आई एम ओनली गोइंग टू लिक 1 पीछे
एंड इफ़ द nth टाइल फॉल्स एंड द n प्लस फर्स्ट टाइल विल फॉल। तो इट्स अ हार्डर प्रूफ, क्योंकि मेरी जो असम्पशन है वो लाइटर है, मेरी असम्पशन बहुत लाइट है, मैं सिर्फ nth टाइल के गिरने की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ nth टाइल गिरी हो। सो लेट्स से मैं कहूँ, आपसे पूछूँ आपके लास्ट एग्जाम में जो स्कोर आया है उससे आपके 3 नंबर बढ़ने चाहिए, राइट? तो मैं पे ज़्यादा आएंगे आपके इस बार, तो दैट्स एन ईजियर थिंग टू से। अगर आप कहें कि सारे पिछले स्कोर्स को देखो तो दैट्स उसमें वो भी शामिल है जो लास्ट वाला स्कोर था। अब बेटे टांग सीधी रखा करें, प्रॉपर्ली बैठा करें। सो you see this assumption, if nth tile falls, sorry, what a silly person, if nth tile falls includes, like ये देखें all previous n tiles fall, sorry, includes nth tile falls, so this is a stronger assumption, ये stronger assumption है as compared to this assumption. This is a weaker assumption, क्योंकि ये n minus first टाइल के बारे में मुझे नहीं बता रही ये assumption जो है। Is this clear? ये weaker assumption है, ये stronger assumption है। So stronger assumption से if you prove something तो proof आसान होगा, weaker assumption से कोई चीज़ prove करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ओके तो लगता ये है कि ये ज़्यादा मुश्किल है और ये ज़्यादा आसान है, लेकिन चलते हैं आगे, राइट? ओके सो मेरा पहला टाइल गिरा, चूँकि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ इसलिए मेरा दूसरा टाइल गिर गया। आप चूँकि ये प्रूव कर चुके हैं कि ऑल प्रीवियस सारी गिर गई हैं, चूँकि प्रीवियस 1 से प्रीवियस कुछ है ही नहीं, राइट? 1 से पीछे कुछ भी नहीं है, सो प्रीवियस एक ही है। इसका मतलब है कि अगर 1 गिरी है तो 2 भी आपकी गिर जाएगी। सो आपको भी पता है कि आपकी 2 गिर गई हैं, मुझे भी पता है मेरी 2 गिर गई हैं। एग्रीड? ओके आगे चलते हैं। अब चूँकि मेरी सेकेंड टाइल गिर गई है तो व्हाट डू आई नो, मेरी थर्ड टाइल गिर गई है, क्योंकि मेरी सेकंड टाइल गिरी है। अब मैं फर्स्ट टाइल को भूल गया हूँ, लेकिन ऑल आई केयर अबाउट इज द सेकंड टाइल गिरी है तो मेरी थर्ड टाइल गिरेगी। आपके केस में क्या है? आपको पता है कि पहली टाइल भी गिर चुकी है और दूसरी टाइल भी गिर चुकी है, तो फिर आपकी तीसरी टाइल गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तीसरी टाइल भी गिर जाएगी, राइट? सो अब हम तीसरी टाइल तक पहुँच गए, राइट? अब मुझे पता है कि मेरी थर्ड टाइल गिरी है तो मेरी फोर्थ टाइल गिर जाएगी, तो मेरी फोर्थ टाइल भी गिर जाएगी। इनको पता है कि इनकी पहली, दूसरी और तीसरी टाइल्स गिर चुकी हैं तो इनकी चौथी टाइल भी गिर पड़ेगी। Do you see that the story is roughly the same story? So actually, let me just tell you, and you can prove it, लेकिन मैं formally prove नहीं करना चाहता. The magic of induction is identically equal to the magic of strong induction. There is no difference. So the mathematics that you can build with induction, any theorem that you can prove with induction, that's another way of stating it. जो भी आप थ्योरम इंडक्शन के साथ प्रूव कर सकते हैं, यू कैन प्रूव इट विद स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, एंड एनी थ्योरम दैट यू कैन प्रूव विद स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यू कैन प्रूव विद इंडक्शन। मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स में कोई फ़र्क नहीं है। ओके सो मैंने आपको प्रूव नहीं किया, सो डोंट आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड यू अकाउंटेबल कि प्रूव दिस फैक्ट, लेकिन मैंने आपको इंट्यूटिवली समझाने की कोशिश की है कि वाई इज़ इट कि बोथ एक्सियम्स आर एक्चुअली स्टेटिंग द सेम थिंग। ओके जी, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ क्वेश्चन। Looks easier but actually it's not. Actually कई बार देखें, for example there are different instruments and sometimes you will find one to be more natural as compared to the other one. तो लेकिन you can rest assured, क्योंकि you can mathematically show, अगर हम actually I don't want to waste your time, like हम अगर एक दिन लगाएं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, it's not very hard to do, like you could understand this proof. लेकिन आई डोंट फील कि हमें कोई बहुत ड्रामेटिक एडवांटेज मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट हियर। सो इट्स एट योर लेवल। सो फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर्स आर हार्डर देन व्हाट यू कैन डील विद एट दिस स्टेज ऑफ योर एकेडमिक करियर्स। जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2s एंड पाइज, उनकी प्रॉपर्टीज समझना इज़ मच हार्डर टू मेक यू अप्रीशिएट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये आप कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन हम कर नहीं रहे क्योंकि वक्त हमें लगेगा एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन इट। लेकिन कई बार आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन आसान लगेगी, कई बार आपको इंडक्शन आसान लगेगी। यूज़ आइदर वन बिकॉज एक्चुअली दे आर द सेम एक्सियम। ओके जी। So what is the difference between induction and strong? nth tile falls, so this is this, आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है? पढ़े The assumption. What we prove, देखें हमें ये दो चीज़ें, so the axiom of induction says if these two things are true you can conclude all tiles will fall. The axiom of strong induction says if these two things are true then you can conclude this, right? They are two different things that you have to check. So यहाँ पे
योर प्रूफ विल बी अ डिफरेंट प्रूफ. यहाँ पे यू कैन ओनली लुक एट वन प्रीवियस टाइल, लाइक इन ऑर्डर टू, जो आपने करना है, आपने जो फिज़िक्स की कैलकुलेशन करनी है वो ये करनी है कि अगर ये टाइल गिरती है तो ये टाइल गिर जाएगी. दैट्स ओनली कैलकुलेशन यू कैन डू. कि आपने अस्यूम करना है कि ये टाइल गिरी है, एंड यू विल नॉट अस्यूम एनीथिंग अबाउट द प्रीवियस टाइल्स. You will just assume that this tile falls, and you will have to conclude using some principles of physics or common sense or whatever that the next tile falls. That's all that you can do. मेरे केस में फ़र्क है, मैं ये assume करूँगा कि all tiles fall up till now, and then I have to prove कि this tile falls. Okay? So that's a different assumption. Maybe all tiles falling create a wind that causes this tile to fall. Who knows कि क्या मैं कर सकता हूँ इसके केस में. Actually it turns out it's false. मतलब they are exactly the same statement. जिसका मैंने आपको prove करने की कोशिश की थी यहाँ पे intuitively but not formally. Okay? Is this clear? So that was a lie. कि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो induction थी, आप use strong induction कर रहे थे. तो ये झूठ मैंने आपसे छोटा सा बोला था. Okay? Is this clear? Okay. So let's जी. मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैंने ये किया था x + 1 x = 2 किया. तो बात Why did you extend? Sorry. So you say, actually, let me erase this and let me try to understand it. You took x + 1 / x = 2. Why did you take it equal to 2? वो पैटर्न फाइंड करने के लिए ऑर्डर गिवन का जो चल रहा है. X + 1 / x is equal to 2. सिर्फ कोई भी इंटीजर करना ना, तो मैं वैसे रफली Oh, अच्छा. Got it. आपने इसको integer assume किया is equal to 2. Okay, right. मैंने सोल्व कर रहा था, बार बार कोई भी जब पावर आती थी दोनों साइड पे हमेशा आंसर 2 आता था. दोनों साइड क्या मतलब? जिस तरह x + 1 / x की होल पावर 4 = 2, बार बार 2 ही आंसर आता था. मैंने You are saying कि if आप x² + 1 / x² is also equal to 2. Is that what you're claiming? Yeah? Is that what you're saying? Okay, this turns out to be true. I don't know the reason why. It has जी to the power n + 1 / x / n is also equal to. राइट. फिर अगर ये पैटर्न नज़र आ रहा है आपको तो यू विल बी एबल टू सी इट. लेट मी म्यूज़ अबाउट इट एंड ट्राई टू टेल यू एन आंसर. ओके, आई ऑफ हैंड आई डोंट नो कि वाई वुड दैट टर्न आउट टू बी ट्रू. Yeah, offhand, is there an obvious reason? x², just looking at it. अगर कोई offhand quick reason आता है तो I'll tell you, otherwise I'll have to think offline. You have x to the 4th plus 1 is equal to 2 x². So you find x. So x + 1 / x is equal to 2. So x is the solution to this equation. And what's the solution to this equation? Yeah, this is just x² minus 2x plus 1 is equal to 0, which implies x plus 1 squared is equal to 0, which x minus 1. So x is equal to 1. So this is saying x is equal to 1. So यहाँ पे if I put x², yeah, so it turns out okay, this is only be true for 2 and not for generally other numbers, because if you solve this equation you find x equal to 1 is the solution to this equation, right? So if you solve this, excellent, let me just wrap up now. So if you solve this equation, right, this is the equation, I can solve it, I find x equal to 1, I think. Okay, सामने आप ये solve किया हुआ है. So x equal to 1, x equal to 1 solve this equation. Okay, so x equal to 1 in fact is the only solution to this equation. So if x equal to 1 solves this equation, now you can see कि if x equal to 1, then x² plus 1 / x² क्या आएगा? 2. x³ plus 1 / x³ क्या आएगा? 2. So everything is going to turn out to be 2, right? Okay, ठीक है जी. अब आप क्या कह रहे थे? x³ और x to the 4, यहाँ पे जब मैंने x + 1 / x to the 4 और x + 1 / x का क्यूब जब मैंने ट्राई किया था तो सही पैटर्न नहीं आ रहा था. आना चाहिए. It has to be true. We just did it, right? I mean there's some calculational mistake because यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि x is equal to 1. इसकी solution क्या है? x equal to 1 is the solution to this equation. 1 plus 1 over n 1 is equal to 2. So x equal to 1 is the solution to this equation. So if x is equal to 1, then clearly x² plus 1 over x² also has to be 2, and x³ plus 1 over x³ also has to be equal to 2. मैं ये कहना चाह रहा हूँ वहाँ 2 की जगह में assumption x + 1 / x की 3 और 4 थे. तो obviously फिर ये आंसर नहीं आएगा because x is not equal to 1. So then it will turn out to be false. यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि x equal to 2 के अलावा नहीं होगा. That's exactly what I said. Okay. ठीक है? Is it clear? Okay.
So let's move on to want to quickly do a bit of, I want to come back to combinatorics, इसकी हम बात कर रहे थे, but I want to do enough कि आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा होमवर्क दे सकूँ और लाइक थर्सडे को ज़रा अच्छा होमवर्क दे सकूँ. So I want to cover a bit of theory and then I want to move on back to combinatorics, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे थे, आपको याद है last time we were doing some kind of counting, so we'll come back to counting. Okay, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा I'm going to do something else, और अभी मैं उस सेगवे को रोक रहा हूँ. राइट, सेगवे के स्पेलिंग्स क्या थे? Yeah, very good, segue. Yeah, so segue के so I'm stopping that segue for a while and I'm coming back to my usual polynomials पे वापस आ रहे हैं, and then we'll go back to combinatorics. Okay, so just be prepared for the switch. लेकिन मैं इसलिए पहले ये कर रहा हूँ ताकि आज मैं आपको एक हल्का सा होमवर्क दे सकूँ और फिर कल मैं एक वीकेंड का होमवर्क आपको दे सकूँ. अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ होमवर्क अगर हम combinatorics में रहे. So I'm just switching gears and coming back to polynomials. Okay, just very easy stuff. इसमें कोई, this is going to be a pretty boring homework, so I apologize for the boredom that you're going to encounter in your homework, but still has to be done. Okay, so पहली बात ये है कि अगर single variable हो तो a standard form is, आप ये book में भी पढ़ सकते हैं, and I'll start encouraging you आहिस्ता आहिस्ता. I may stop lecturing as much as I do and I may encourage you to read the book on your own, because आपको पता है ये book लिखी गई थी self study के लिए. आपको पता है इसकी history क्या है इस book की? So the book was written क्योंकि रशिया में बहुत बड़ा मुल्क था. So ये रशिया, this is before, this is Soviet Union, right? So Soviet Union एक ज़माने में था 19 पता नहीं कब टूटा था. I've forgotten the year that Soviet Union टूटा कब था. 80s में कहीं टूटा या 90s में जाके, जब जी कोल्ड वॉर के बाद जब ये टूटा था. I've forgotten the exact time. So Soviet Union was a huge country और there was a lot of poverty. बहुत बड़ा मुल्क था. And there was some very like, अगर आप देखेंगे तो one of the most brilliant mathematicians ये सारे ईस्टर्न यूरोप वगैरह से और रशिया से आया करते थे. तो लेकिन वो लोग obviously concentrated थे in the cities and they wanted what are you trying to do? So they wanted to sort of expand the mathematical reach to other लाइक पूरे मुल्क के अंदर वो एक्सपैंड करवाना चाह रहे थे. और ये ज़माना है जब इंटरनेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है. 1980s की बात कर रहा हूँ, उसमें डाक चलती थी. राइट, आप ख़त भेजते थे और ख़त आते थे. दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन. सो देयर वाज नो फ़ोन्स. बड़ा मुश्किल है आजकल सोचना कि कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था. फ़ोन बहुत कम थे. आई मीन मोबाइल फ़ोन की बात करें, फ़ोन बहुत कम होते थे. एनीवे, सो उस वक्त गेल्फांड ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी कि चूँकि हर गांव में, हर शहर में, हर छोटे शहर में देर आर स्मार्ट किड्स रोमिंग अराउंड और उनके पास अच्छे टीचर्स मौजूद नहीं थे. तो ही रोड दिस बुक, द सीरीज़ ऑफ बुक्स उसने स्कूल मैथमेटिक्स के लिए लिखी थी कि बच्चे ख़ुद बैठ कर पढ़ सकें. इसीलिए आपने देखा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मौजूद हैं. राइट, सॉल्यूशंस इसलिए मौजूद हैं कि अगर बच्चा अकेला एक गांव में बैठा हुआ पढ़ रहा है कोई, राइट, तो उसके पास कोई अच्छा टीचर नहीं है जो उसको सॉल्यूशंस बता सके. जब वो फंस जाए तो वो क्या करेगा? तो उसके पास कुछ सॉल्यूशंस हों और कुछ करवा दिया और कुछ छोड़ दिया. बात समझ रहे हैं? उसूली तौर पे जो तरीका है इस बुक को करने का वो ये है कि आप सॉल्यूशन कोई भी ना देखें और सारे सवाल ख़ुद करें. ये उसका मंतिक जो है, जो बुक का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि सॉल्यूशंस इसलिए दी हुई हैं कि दे वर मेंट फॉर चिल्ड्रन टू स्टडी ऑन देयर ओन विदाउट अ टीचर. तो ये किताब उन बच्चों के लिए लिखी गई है जिनके पास कोई टीचर नहीं है और वो बग़ैर टीचर के ख़ुद काम कर रहे हैं. ओके, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको शायद इनकरेज करना शुरू कर दूं इन द सेंस कि मैं आपसे कहूँ ये पेजेस पढ़ कर ख़ुद समझ कर ख़ुद काम करना शुरू करें, बजाय ये कि मैं आपको हर पेज पे जाकर एक्सप्लेन करूँ कि क्या चीज़ हो रही है. सो यू शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट हैबिट. कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव टू डू. So there is a standard form. So if you have a polynomial in one variable, so one variable polynomial अगर है आपके पास कोई, so just some stupid definitions. One variable polynomial है, तो standard form का क्या मतलब है? So standard form का मतलब ये है so I could have a polynomial like this, right? So I can have a polynomial like 2x cubed plus 7x to the 4th minus 3x plus 4, right? This would not be in standard form. The standard form would be put the highest power first, then put the next highest power, and so on and so forth. This is called the standard form. Okay, so this is standard form. Standard form. Okay,
So this is called the standard form of a polynomial. Now remember आपकी जो fractions होती थी वो proper और improper होती थी. Proper का मतलब ये था कि the denominator was less than the, sorry, improper का मतलब था denominator is less. So this was improper fractions, this was an improper fraction, and this was a proper fraction, right? So this is, for some reason this was called improper, and I don't know क्या इसकी history है, why is it called improper, क्योंकि it's as proper a fraction as the other one, लेकिन I mean this is terminology that sticks, so that's what we use. Yeah, this is improper and this is proper, हालांकि both are equally good fractions, right? ये होता था. तो इसी तरह in polynomials we have something very similar. मैं सिर्फ थोड़ी सी definitions निकालना चाहता हूँ, very boring stuff, but just want to get it out of the way. तो polynomials में you have something similar. So improper polynomial would be something like this, जिसकी degree is, so you can see that the degree of the numerator is larger than the degree of the denominator. So this is called an improper fraction. यहाँ पे भी ये improper होगा. And a proper one would be, obviously, if I reverse it, this would be considered a proper fraction. So is x plus 2 over x an improper fraction? X plus 2 over x, exactly, yeah. So yeah, x plus 2 over x is also improper. So yeah, absolutely. So x plus 2 over x is also an improper fraction. If it is equal, then it's also improper. Okay. Now remember कि हम लोग if we had something like this 37 over 7, so you could write it as 5 into 7 plus 2 over 7, and that would turn out to be equal to 5 plus 2 over 7, something like that, right? So you could have a quotient and a remainder. ये जो नीचे था, this was called a divisor, ऊपर जो था वो quotient था. So this was, I guess, the quotient, the divisor and the remainder, right? इस तरह की कोई चीज़ होती थी, right? ठीक है ना? Just quickly revising, अगर कोई चीज़ ना पता हो तो just raise your hand and ask a question कि जी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही. So you can do something very similar over here. So for example, as a trivial thing, let's try maybe x plus 3 over x plus 1. So this would be equal to x plus 1 plus 2 over x plus 1. इस केस में बहुत simple है. This would be 1 plus 2 over x plus 1, but we can do something which is a bit more interesting. So let's try doing something like this, which is, let's try to divide, क्योंकि यहाँ पे हम division करते हैं, right? That's what we do. So let's try to divide. Let me quickly try to divide maybe x cubed plus 2x. So let's think of this जो है, so let's look at this fraction, which is x cubed. It's an improper fraction, and we want to write it as a quotient and a remainder, and we'll see why. Okay, कुछ देर में देखते हैं. But so let's say this is the fraction that you have, and now you want to convert it into something which is in this form. Okay, so one way that you could do it is, and there are two ways to do it, and you can see that. So you can see that this is best done alone, और क्लास में करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है. I don't add any value by doing it in front of you. तो अगर आप खुद, if you were to do it on your own, so there would be no difference because I'm not really adding any value. So let's try. So let's try x cubed plus 2x, और यहाँ पे, so I'll actually put in, so I'd like to leave some space. And then you're dividing by x squared minus x minus 1, and we'll try to justify it in a second. So if I divide it, I get x into x cubed, I get x cubed minus x squared minus x. अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो please correct me if my algebra is incorrect. Then I subtract it off, I get x squared plus 3x. oh minus x plus 1 है, सिर्फ मैंने ये, आपने मुझे correct नहीं किया, right? So it's going to be x squared
plus x, right? Is that okay? Then you get this, then I have plus 1, and then I get x squared minus x plus 1, and I get minus 1. Oh, at x plus x, 2x, sorry, I was hoping it end kar gaya. 2x minus 1, and now it ends, right? Now the way that you can start to think about this problem is also, मैं ज़रा quickly जा रहा हूँ कि I don't know कि कितना इसमें content है, so you can start to see x cubed plus 2x over x square minus x plus 1. You can write it out as, how do you want to write it out? You can write it out as x cubed minus x square plus x plus x square plus x over x square minus x plus 1. Anything wrong with this? All good? Right? Agreed? कोई चीज़ गलत नहीं की जी? Sir, why we are at 2x minus 1? Because x minus minus x will be 2x minus 1. क्या हुआ? Sir, when we are multiplying x square minus x plus 1 by 1. So, X square minus x plus 1. X square minus x plus 1. Right? sir, plus x minus x will be cut it over. Sign opposite होगा, it's a subtraction, right? Okay, fine. I didn't write it down कि otherwise वो गंदा लगता है, that's all. That's why I didn't write it because it makes it ugly. Otherwise I'm just doing it in my head. And I'm trying to justify this, right? So अब the important thing is that this can be written in this form. किसी को कोई गलत काम नहीं है. But now चूँकि division है, so one thing divided by the same thing, but now इसका difference क्या है दोनों के बीच में? X multiplied by this will turn out to be this. Agreed? X times this is x cubed minus x squared plus x. So this I can write it out as equal to x plus x square plus x over x square minus x plus 1. Right? Agreed? Iska or iska, because this is really x times this object. Nahin? Nahi baat ban rahi? Okay, let's try another one. Slightly different, more detail. So this is equal to x multiplied by x square minus x plus 1 plus x square plus x over x square minus x plus 1. Is that okay? इसको मैंने इस तरह लिख दिया. Yeah? X into x square is x cubed, x into minus x is minus x squared, x into plus 1 is plus x. Okay? But now you can see that the numerator and the denominator में ये दोनों common है, so they cancel and I'm just left with x. Right? So this will turn out to be equal to x plus x squared plus x over x squared minus x plus 1. And now I let this thing, so you can see we are doing something very similar to this, right? जो हम numbers के साथ करते हैं. So now you are left with x squared plus x. So I'm going to say this is equal to x. Now x squared plus x को I'm going to write it down as what? I'm going to write it down as x square minus x plus 1 plus 2x minus 1 over x square minus x plus 1. Is that okay? Because x square plus x को मैंने इस तरह तोड़ दिया. Right? ठीक है ना? X square plus x is this way, right? But now you can see कि x plus, अगर मैं इसको divide करूँगा तो I'm just going to get a 1. So I get x plus 1 plus 2x minus 1 over x square minus x plus 1. Right? That's exactly what we did over here. So what I'm trying to do is I'm trying to justify जो हम यहाँ पे कर रहे हैं by doing something very kosher. सिर्फ हमें figure out करने के लिए अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
द लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम मेक सेंस कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने ये एक्चुअली मैं जो नंबर्स ढूंढ रहा हूँ ये मैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम से देख के कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें लाइक देयर इज़ नथिंग, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई द लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम यूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी क्लीन एंड सिंपल। इसके बारे में कोई सवाल? अगेन लेट मी ट्राई टू रिपीट। देखें, अगर आपको कोई ये तरीका बताए, राइट, तो व्हाट यू वांट इज़ यू ऑलवेज वांट मल्टीपल्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दैट इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू डू। सो हमने इन ऑर्डर टू, सो हमने यहाँ पे क्या किया, वी फाउंड अ मल्टीपल ऑफ, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट, ठीक है ना। जब हमारे पास ये मल्टीपल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वी एडिड समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट अ मल्टीपल, राइट। What was the extra thing that we added? We added this stuff to get the multiple जो हमें चाहिए था। इसका और इसका फ़र्क है, राइट, जो ये है, तो इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया ताकि हमारी क्वांटिटी तब्दील ना हो। What I'm trying to do is I'm trying to justify the long division algorithm, कि आपको अगर शक पड़े कि क्या long division algorithm polynomials के लिए काम करता है या नहीं करता, तो इस शक को ख़त्म करने के लिए दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। ओके, म्यूज़ अबाउट इट जी, थिंक अबाउट इट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट टुमारो जी। एक जो पॉलीनोमियल की होगी वैल्यू वो एक इंटीजर के इक्वल होगी, मे बी नॉट, नहीं इंटीजर की कोई ज़रूरत नहीं है। अ पॉलीनोमियल इज़ समथिंग विच इज़ स्टैंड अलोन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो। अगर हमें एज्यूम कर लें कि एक्स की वैल्यू, अगर अस्यूम करना चाहें तो कर लें, लेकिन पॉलीनोमियल हैज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ वैल्यू। अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू ना दें तो ना, पॉलीनोमियल बाय इटसेल्फ कैन बी एडेड। सो देयर इज एन अलजेब्रा ऑफ पॉलीनोमियल्स, आई कैन ऐड टू पॉलीनोमियल्स, आई कैन सबट्रैक्ट टू पॉलीनोमियल्स, आई कैन मल्टीप्लाई पॉलीनोमियल्स, राइट। सो पॉलीनोमियल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, बट येस यू कैन इवैल्यूएट अ पॉलीनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स। आई एग्री। सो व्हाट आर यू सेइंग? सो सर वो हम पॉलीनोमियल की वैल्यू करते तो वो एक इंटीजर ही होगा। अगर आपके पॉलीनोमियल का कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स तो फिर इंटीजर होगा, लेकिन अगर आपका पॉलीनोमियल इज लाइक दिस at x equal to 1, it is not an integer, it is a fraction. And if your polynomial is like this, then it's not even an integer, it is an irrational, it's not even a fraction, it's an irrational number. So it depends on what the coefficients are, और x की वैल्यू 1 डालना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका लेट से बड़ा अच्छा शरीफाना पॉलीनोमियल भी हो ऐसा, इसको मैं x इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डाल दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 2 + √2 विच इज़ एन इरैशनल नंबर। अगर x की वैल्यू √2 डाल सकता हूँ ना, तो पॉलीनोमियल्स इन जनरल हम जो लेते हैं आर इवैल्यूएटेड ऑन द रियल लाइन। हम रियल लाइन को बहुत एम्फेसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको हमने कभी रियल नंबर्स के बारे में ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन की नहीं है। हम फ्रैक्शंस के बारे में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स के बारे में करते हैं, रियल नंबर्स को हम बस बता के भागते रहते हैं उनसे, क्योंकि रियल नंबर्स आर रियली हार्ड। आपको पता है कि ये 20th सेंचुरी में जाकर रियल नंबर्स लोगों को समझ आना शुरू हुई थी कि रियल नंबर्स चीज़ के हैं। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टॉपिक जो रियल नंबर्स का है जी। ओह, आई थॉट यू हैड अ कमेंट। ओके, एनी अदर कमेंट्स, क्वेश्चंस? ओके, सो इसके बारे में कोई सवाल? सो द आइडिया वाज कि मकसद ये था ये करने का, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि आपको अगर इस पे शायद शक पड़ रहा हो कि क्या लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम जिसको एक्सटेंड किया गया है फॉर, आपने लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है फॉर होल नंबर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट, और फॉर फ्रैक्शंस, दैट्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। तो क्या पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होता है यूजिंग द डिग्री एज समथिंग लाइक दैट? तो ये आपको शो कर रहा है कि येस यू कैन एक्सटेंड इट टू पॉलिनोमियल्स। द आइडिया ऑफ द जो है, अब ये देखें तो या आई मीन दिस जस्टिफाइज दिस लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, ठीक है जी। ओके, नाउ सो इन जनरल अगर आप पास कोई पॉलिनोमियल हो, सो यू हैव अ पॉलिनोमियल, सो फॉर एग्जांपल you have a polynomial, so what you can do is कि in general आप किसी भी polynomial को, जिस तरह हमारा ये polynomial था, I can write x cubed plus 2x
can be written as x plus 1 multiplied by x square minus x plus 1 plus the remainder, which was 2x minus 1. Agreed? इसमें किसी को कोई इतराज़? Right? Because x square plus 2x, ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, पर और looking at this, जिसको भी आप देख लें, उसको देख लें, इसको भी देख लें, that's exactly the same statement. Like जो हमने ये 2 बोर्ड्स पे भरा है, डेट बोर्ड पे भरा है, इनकी conclusion हम ये कह सकते हैं. ठीक है ना? Because if I divide it by x square minus x plus 1, this comes over here, you get x plus 1 over this divided by this, which is exactly what we did. ठीक है? So this is, हमने जो किया है इसमें this is called the quotient. इसको quotient कहा जाता है मेरे ख्याल में, right? ये remainder है. They are all polynomials. So this is the remainder. इसको क्या कहते होते हैं? डिवाइज़र. वेरी गुड, थैंक यू. और इसको डिविडेंड कहेंगे शायद. ओके, ठीक है जी. एनी इश्यूज विद दिस? यहाँ तक ऑल गुड? सो ये इसको जब डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दिस डिवाइड बाय दिस क्या आता है? द सेम थिंग, 1. तो ये 1 आ गया यहाँ पे और बाकी वो बच गया. ओके, सो दिस वाज अ वेरी do I want to do this? Maybe next time, because I want to talk about combinatorics. हमारे पास टाइम कितना बचा है? 10 मिनट है. ओके, मे बी आज मैं combinatorics ना करूँ और कल कर लूँ, because there is something really cool that I want you to see in polynomials. Okay. अच्छा, इसके बारे में कोई सवाल? I've done this very quickly. I do apologize for how quickly I've done it. लेकिन ये था कि I thought कि इसमें कोई इतनी जान नहीं है, इसलिए I didn't spend too much time on it. But if you have any queries or questions, so please ask. जी. Where they're on the leftmost, on the bottom. So the third step, how did you? First step, ये. Like after that. This how one? How did you reach the next step? You got x plus x squared. How did you get this? Because I can see x cubed minus x squared plus x squared minus x plus 1, right? So I can take x to be common here, and I'll be left with x squared minus x plus 1. So x common, x squared minus x plus 1. और कोई चीज़ before I erase this board? Okay, so शायद मैंने कोई छोटी मोटी चीज़ skip कर दी हो from the book. But I would suggest कि go ahead and read the book. बेटे book बंद कर दिया करें जब पढ़ा रहा हूँ ना, उससे फ़ायदा नहीं होता. Read it on your own. And I would very strongly suggest, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में मैं करना भी शुरू कर दूँगा, कि I'll really move you to reading the book and we do some interesting fun problems instead of me actually teaching you stuff. There isn't much to teach. There's a lot to learn by doing problems. कि Alfund की heart is really in the problems. लेकिन I want to do something, which is, here's a question for you. I just wrote down dividend, quotient, divisor, remainder, right? So now let me ask you, is it possible? That's a question for you. I say, this is such a central question that I should erase. It's an important, nice question that mathematicians, मैं इसको भी erase करने लगा हूँ, ताकि at least आपका concentration इसी सवाल पर रहे. And maybe I should move this over here. Okay, it's a very important question. So I'm going to copy this back again. So this is x plus 1 into x square minus x plus 1 plus 2x minus 1. Okay. Is it possible and that's a question for you to muse about, कि x cubed plus 2x is equal to, I was dividing by x square minus x plus 1.
some polynomial p of x plus some other polynomial q of x where p is not equal to x plus 1 and q और it doesn't matter कि इनमें से एक या कुछ भी Is that possible? Oops, I think I have to go. मुझे लगता है. Yeah. Sorry for taking this call. Hello. Hello. आगे? Why, if it isn't, argue it can't be that way. सवाल समझ आ गया? सो तरीका आइडिया ये है कि idea is very similar, right? Let's say you take 37 is equal to 5 times 7 plus 2, right? Now you say 37 is equal to n times 7 plus r, right? Where n and r, n is not equal to 5 and r is not equal to 2. Is it possible? इसमें रिमाइंडर की क्या ख़ास क्वालिटी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर बचता है जब डिवीजन में तो क्या बचता है? व्हाट डू यू नो अबाउट द रिमाइंडर? सो रिमेंबर दिस इज़ द रिमाइंडर. इसको रिमाइंडर मैं हमेशा भूल जाता हूँ. दिस इज़ द रिमाइंडर, दिस इज़ द कोशेंट, दिस इज़ द डिवाइज़र, राइट? सो ये डिवाइज़र है, राइट? दिस इज़ द कोशेंट एंड दिस इज़ द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर की क्या ख़ास बात होती है जब आप डिवीजन करते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द रिमाइंडर? ऑलवेज इट इज़ डिवाइज़र से छोटा होता है, राइट? ओके, दैट्स समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो कैन यू आर्ग्यू यहाँ पे कि एन एंड आर आर यूनिक? हाँ, वाई? अगर हम n की कोई और या वैल्यू ट्राई करते हैं, जैसे n से लेस या n से ग्रेटर, Right. n से ग्रेटर करेंगे तो 37 से एक्सीड कर जाएगी. क्यों? 3 मुझे तो आर भी नहीं पता कि आप तो एन और आर इस तरह अरेंज कर सकें. अगर n की वैल्यू कम करेंगे तो r ग्रेटर हो जाएगा. कितना ग्रेटर होगा? मतलब उसका एक मल्टीपल मतलब 7 से बढ़ जाएगा, +7 होगा. अगर +7 होगा तो वो 7 से बढ़ जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा 7 से. वो तो हो नहीं सकता, रिमाइंडर 7 से बढ़ नहीं सकता. ओके, अगर मैं n को बढ़ा देता हूँ एक, फिर क्या होता है? तो रिमाइंडर कम होगा. कितना कम होगा? 7 से. तो फिर क्या होगा? अगर हो जाए कम, कम ही हो रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा. अगर एक मल्टीपल हम उसके अंदर ज़्यादा करेंगे तो रिमाइंडर तो कम हो ही जाएगा. तो फिर बड़ी अच्छी बात है, रिमाइंडर कम हो गया. तो फिर क्या नुकसान हुआ हमें? अगर हम 5 से ज़्यादा अगर n को करते हैं तो उसको रिमाइंडर को 7 कम होना चाहिए. अगर रिमाइंडर पहले से 2 है तो अगर वो 7 कम होगा तो नेगेटिव. तो रिमाइंडर नेगेटिव भी नहीं हो सकता. रिमाइंडर इज जस्ट नॉट लेस देन 7. द रिमाइंडर इज बिटवीन 7 एंड दिस, राइट? ये हमें पता है. सो अगर हम उसको 7 कम करेंगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, अगर 7 ज़्यादा करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए हमें पता है कि n चेंज नहीं हो सकता, ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स यूनिक. नाउ ट्राई टू वरी अबाउट दिस फैक्ट. कैन यू नाउ जनरलाइज? सो आपकी बुक में ये सवाल हुआ है. ओके, आई वुड लाइक यू टू म्यूज़ अबाउट इट योर सेल्फ. बुक में देयर इज़ अ क्वेश्चन that talks about the uniqueness of quotient and the remainder. It's kind of a fun problem to use about कि और अगर आप थोड़ी देर ट्राई कर लें, आधा पौना घंटा ट्राई करके देख लें, ना समझ आए तो बुक से बेशक आंसर पढ़ लें. But try to really enjoy the fact that you are trying to prove
दैट दिस फैक्टर जो फैक्टराइजेशन तो नहीं है कि द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर आर यूनिक फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, ट्राई करके देखिएगा और अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो सोल्यूशन पढ़िएगा, बट यू विल एंजॉय द सोल्यूशन आफ्टर यू हैव थॉट अबाउट इट योरसेल्फ। ठीक है ना? ओके, सो मैं आपको होमवर्क दे दूं ताकि ये लाइट सा होमवर्क है, 10 मिनट का भी शायद ना हो, शायद हो, मुझे नहीं पता, बट ऑन दैट स्केल है। सो इट्स ओके, सो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये या